Assalamu alaikum, welcome to my channel Masala Munchies. I made this channel to bring you new and simple recipes. आज हम बनाएंगे tuna fish kebab. ये recipe mild or kid friendly है. It's for anyone that loves flavor but without too much spice. तो अब आए मैं दिखाती हूँ आपको क्या ingredients आपको चाहिए. Okay, so अब हम शुरू करते हैं making the tuna kebabs. First, I mushed up the potatoes. फिर हम इसमें tuna ऐड करेंगे. Then all the dry spices. Quarter teaspoon of red chili flakes, 1 teaspoon of cumin powder, 1 heapful spoon of coriander powder, quarter teaspoon of haldi powder, turmeric powder, half a teaspoon of red chili powder, and half a teaspoon of salt. Okay, फिर हम ऐड करेंगे all the green ingredients. हम ऐड करेंगे 2 finely chopped green chilies, handful of dhania. You could use fresh धनिया, ये frozen धनिया. आप फ्रीज भी कर सकते हैं धनिया. अच्छी तरह वॉश करके फिर आप अच्छी तरह ड्राई करके और फिर फ्रीज कर सकते हैं. ओके, अब हम हैंड से मिक्स करेंगे अच्छी तरह. जब अच्छी तरह मिक्स कर लें तो ऐसे लगेगा. ओके, हम शैलो फ्राई करेंगे. You could also use half a cup. For shallow fry, a quarter cup is enough.
एडजस्ट कर सकते हैं स्पाइसेस को, टीस्पून को टेबलस्पून में कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर आपको मोर फिश टूना आपको मोर फिश पसंद है तो आप एक और कैन फिश का डाल सकते हैं, टूना फिश का।